Hi Abhijit, namaskar. No, I'll start when it's all ready. Namaskar, Anjan. Um, Namaskar. so, so I'm a Odias in machine learning conference Korshu, and Anjan has a really important message for everyone. So, Anjan, maybe you can start by introducing yourself. Oh, sure. Thank you, Abhijit. So, like ମୁଁ ଅଞ୍ଜନ ଜଣେ enthusiastic ଓଡ଼ିଆ language activist କହିପାରିବେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ करे and so ମୁଁ interact करे and in that direction technology को और language को लेके ମୁଁ track करे तो that's a little bit about me, a technology enthusiastic and self-proclaimed language activist, you know. So that's what is a little brief on me. A staunch ओडिया भाषा को भल पाउଥିବା मनुष्यटिए and yeah and technology को भल पाउଥିବା मनुष्यटिए. तो आमे So that's a little bit about. ଏବେ Odias in ML conference କରୁଛୁ तो ଆମେ ଏଇଟା important କାହିଁକି ଏବେ କାହିଁକି Oh, that's a ସେଟା ଗୋଟେ important question. Actually ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି high resource language like English, French ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆକୁ compare କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ content ବହୁତ କମ, right? Basically content जो ଜିନିଷଟା data ହିସାବରେ କାମ କରେ ଆମର machine learning project ମାନଙ୍କରେ ସବୁ so ଆମର ସେଠି content ଗୁଡାକ ବହୁତ କମ ତେଣୁ जो बड़ बड़ टेक्नोलोजी कंपनी मानकर बॉट सब से कंटेंट को पार्स करिकी ताकू सेमानकर इंधन बा तांकर रॉ मटेरियल्स हिसाब रे यूज करि पारना कहीं हमर कंटेंट्स कम अछि राइट हाई रिसोर्स लैंग्वेज मानकर से प्रॉब्लम नाही कहीं ना इंटरनेट रे खोजि देले प्राय कंटेंट आछि से लैंग्वेज रे इंग्लिश तो पूरा यू नो सो ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମର କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ସେ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯାଇ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ମୁଁ ଅନେକ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ସ ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆଉ ଇଟ୍ସ ଏ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଆନ୍ସର୍ସ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର୍ସ ମାନଙ୍କର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଏମିତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ମାନଙ୍କର सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो माने अछंती फॉर एग्जांपल जो माने भाषा वैज्ञानिक सेमानन को कंप्यूटिंग जाना नहीं और जो माने कंप्यूटर साइंस रो प्रवीण एक्सपर्ट जो माने तांकू लैंग्वेज विषय जाना नहीं एंड गोटे प्लेटफॉर्म नहीं ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज को लिंक करे कि ओडिया भाषा को आगो को आनिबो राइट गोटे गोटे प्लेटफॉर्म विजिबल प्लेटफॉर्म नहीं मु प्लेटफॉर्म नाही कहले माने हुए तो काहा को केमदी केमदी लाइक से प्लेटफॉर्म नाही माने साधारण लोक निजको इन्वॉल्व करे परथु जो क्राउड सोर्सिंग हमें कहूछु साधारण को निजको इन्वॉल्व करे परथु प्लेटफॉर्म दे नाही एंड ए सब जो बहुत बड़ प्रोजेक्ट सब अछि या पई मल्टीपल डायमेंशंस दरकार राइट फॉर एग्जांपल आपण जदी देखिबे एटा गोटे सिंगल प्रोजेक्ट नै कोनोसी गोटे प्रोजेक्ट देखंतु एटा गोटे सिंगल प्रोजेक्ट नै एटा गोटे इकोसिस्टम सो इकोसिस्टम रे कोन हबना ताकू टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली रोल प्ले करूची आ ओडिया जन मशीन लर्निंग तो एआई आ एमएल ओडिया और ओडिसा को केमती आनिबो से दिगरे प्रचेष्टा करूची किंतु टेक्नोलॉजी गोटे इज अ पार्ट ऑफ द होल इकोसिस्टम राइट हम जदि बड़ इकोसिस्टम देखिबा टेक्नोलॉजी को व्यवहार के करिवे कम्युनिटी व्यवहार करिवे राइट एबे हम माने जो माने टेक्नोलॉजी रे आमे डील करूछु जो माने आमे टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल आमे इंजीनियरिंग करूछु एमएल प्रोजेक्ट सब बा एमएल पई कोड लिखुछु डाटा पाइपलाइन सब तयारी करूछु हम माने कोन करूछु ना हम माने यूजर को कम्युनिटी द डे टू डे यूजर को बहुत दूर रे रहिछु राइट
the community is not involved. So community is a second dimension which we need to bring it in this ecosystem. The third thing which is required is academics. Academics माने कौन होचंदी जो बहुत fundamental research दरकार. For example, ओडिया भाषार व्याकरण grammar, right, it has its own unique quirks. किछि दिन तळे जणे बंधुक संगे कथा होथली ट्विटर रे, से हठात एमती खोजु खोजु रिसर्च करी बाहर कले जे ओडिया स्पोकन स्पीच टू टेक्स्ट डोमेन रे ओडिया रो कथावार्ताटा इंडोनेशियन संगे बहुत क्लोज. से कौन कले गूगल ट्रांसलेट जाय कि सेठी ओडिया लेखिले आउ ताकू स्पीच करया पय चेष्टा कले. ओडिया सपोर्ट करूनी स्पीच करया पय आउ से तार ऑडियोटा पठाइले. So सेटा गोटे chance discovery that Indonesian language is closer in speech to Odia language, meaning Google's whatever that is able to read out Odia script in Indonesian voice, whatever, into a thing which an Odia can understand, right? This is a very unique thing which an Odia native speaker could figure out. The person who figured out is a rookie, like he's starting. He's just a techie in a different domain, but he's an enthusiast. But the point is, these findings, right? These findings from a rookie can actually be translated into a person who is actually doing machine learning. For example, an existing speech recognition model which supports Indonesian, and then feed them with more, probably should I say, the word reinforcement, another layer of training with unique Odia accent. So that model, whichever is trained, probably would be able to, get Odia faster, right? So the point is, there is someone who would be able to put these pieces together. And in some places there are fundamental researches there. I think those are the places where academics can come in. So technology, which is basic, but technology doesn't know how to do the users. So that's where we will look at community. So community is the person. Community is what they're going to use it, and then we need academics to be able to stitch together these little findings into fundamental research, which can actually go into the market, right, in the form of products. The fourth factor here is that we need to institutionalize them. Right? For example, this enthusiast friend of mine could find that, right? Oh, Indonesian is closer to speech into Odia, but we don't know how true is that. We have to go to a linguist, and we technologists do not know. So that's where an academician can help. But can this person who got this idea, can that person be able to ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ କି? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବିଲ୍ଡିଂ. So we need a institution building at a scale where ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ଆମ ଭଳିଆ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଗ୍ରହଟେ ଆସିଲା, ଆଗ୍ରହଟାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ମାନେ ଆଗ୍ରହଟାକୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିପାରିବେ କି? ସେଇ ଯୋଉ facilities ଟା ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏବେ, right? So institutionalization is another dimension which we need to have. The last but most important dimension is about sustenance. Like this enthusiast who come up with, like we'll have many enthusiasts like that, right? You and me are probably one of those enthusiasts. The point is, am pakhre dana pani ro samasya rohuchi, right? Meaning ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ନିଜକୁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, and then ଆମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖୋଜିକି କରିପାରିବା, ଆମେ କରିପାରିବା, definitely ଆମେ କରିପାରିବା, right? When there is a curiosity, we can trace it down to do that. But ଯଦି ସେଇ ଲାଇନରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ. For example, ମୁଁ ଯଦି ଅଭିଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଜନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ଅଭିଜିତ ଗୋଟେ at least hello world kind of say network architecture koi paribe, jo architecture ta to a certain level at mane it will give certain form of output, right? Correct output, and then we can iterate to improvise. To sei bhaliya kochi jodi abhijit ko pakhre vision ro skill achi, au jodi e rookies asla taku
they get together, they build a team, right? They try to institutionalize, and then it comes sustenance. Sustenance is these people who has an idea. Can their idea be brought into real market, and can they be good? Can they be reaching to the market where they make real money, right? So that there lies sustenance. Like if you cannot sustain something, your ideas will go with your enthusiasm, because enthusiasm, inspiration, these are all fragile. These are all short-living things, right? So sustainability is a big thing in this world. So 5 dimensions मिसेकी आमे कोन करि परिबा ओडिया मान को टोटल ग्लोबल लेवल एग्रीगेट करी कि आमे आगे परिबा तार आउट के डायमेंशन पीएसटी सो मु ताको समराइज करछु टेक्नोलॉजी institutionalization sustenance and community academics right मु ताको माने मने रखिया पई it is a cat बोली कहे so I for institutionalization S for sustenance and then A for academics and then T for technology, right? And then the fundamental C is community. So এই जो पांचटा डायमेंशन करी कि हमें जदी आगांतु ताहले कोन होता ना like you know the next generation the kids who is in the engineering college or the kids who are not even in their college yet they can actually come out of their present may I say fear ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ ଭୟ ଅଛି ଏଆଇ ମେନସନ୍ ହଁ ମାନେ ଆଇଦର ଭୟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଦଉନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତା so we need an ecosystem with these 5 primary dimensions. And then there is, I'm not sure if you would have noticed, there are many Odias who are actually excelling in this latest technology, AI and ML, right? At least from LinkedIn, I have seen many Odias who are at management positions, taking management decisions for the machine learning projects, right? And we have Odias who are successful in Silicon Valley, who have built their companies based on artificial intelligence and machine learning. Now the point is they are, I mean, the spectrum that they are at a different end, technical end. They're different end, and that information will never go to common Odias. Now, if that doesn't happen, this common Odias wouldn't be able to think in the way the technology revolution that is now sweeping us, right? AI is everywhere. So to your question, why it is a right time? It is a right time because Odias are technically capable, intellectually able, all over the world, spread across, can help each other to build this ecosystem, to build the next generation of things where we Odias wouldn't be able to left behind like we are now. We are being called as a low resource, language. Odia is called a low resource language. The digital content in internet for Odia is very less, and that is a major headache for all these techies who want to actually do something with Odia, right? So I think we are at a stage where all Odias all over the world can come together and build this ecosystem to make the product, to make many products and make ourselves individually Odias together and Odisha as a geographic entity prosperous by this technology. I think it was too much, but I would summarize with that it's a cat. Like it's a cat, and we are ready at this moment. We just have to connect the dots. So आपण गोटे इकोसिस्टम बनाया चाहते जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अच्छा दी स्टेक होल्डर्स आर एक्सपीरियंस्ड पीपल आम भाया साधारण सामान्य व्यक्ति केमिति कंट्रीब्यूट करि परिबे टू दिस इनिशिएटिव जो आपण नउछन्ते देखंतु किए साधारण किए प्रवीण से प्रश्नर उत्तर आसीबो जे किए कोन करूचंती राइट किए कोन एक्चुअली डेलीवर करचंती व्हाट इज द आउटपुट राइट आमे 2 घंटा बसले फॉर एग्जांपल आपन को देखंतु आपन 2 घंटा बसी जदी चिंता करिवे आपन गोटे मे बी विजुअल मॉडल टे बने दे परिवे बा गोटे प्रॉब्लम
गोटे 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 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड विजुअल प्रॉब्लम को गोटे कंप्यूटिंग मॉडल रे आपण बने दे परिबे एंड दैट माइट टेक सम 2 to say 20 hours depending on the complex like just the overall design but आपण जोटा को एटा को आपण होय तो साधारण बोली कहिबे जे फॉर एग्जांपल कहिबे ओडिया कैरेक्टर रिकॉग्निशन राइट 1 2 3 4 ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन करिवो राइट एटा ए प्रॉब्लम टा आपणको अभिज्ञता परे आपणको एथरे प्रवीण भाबरे जणा जिवो राइट 1 2 3 4 जंतु ताको हमरो कोन दिन ना इमेज रिकॉग्निशन हेलो वर्ल्ड जे MNIST डाटा सेट तो आपणको सेटा ओडिया पई डिजाइन करिया पई आपणको सो तो सेटा इजी लागि पारे किंतु जो पिलाटी आसुची सप्तम श्रेणी रे बा इवन इंजीनियरिंग पिला जो पिलाटी इंजीनियरिंग रे आरंभ करछि ता पई होते प्रॉब्लम टा डिफिकल्ट हे जिवो राइट इटा से आपण मन पई सेटा हेलो वर्ल्ड इमेज रिकॉग्निशन रो हेलो वर्ल्ड किंतु से मानन पई एटा गुटे माउंटेन तो किए साधारण आ किए प्रवीण एक्सपर्ट that is a matter of perspective right now problem is এই सब जिंस गुड़ाक माने बहुत स्किल दरकार करे फॉर एग्जांपल इफ यू आर a good coder that's not enough for you to be successful you code well in Python you know data pipelines and then you should be able to know your users you get into problems where you don't have data you should be able to find an innovative way of getting your data and then once your data is there you train your model and then you get into certain percentage and then there you need experts like you to be able to figure out okay what is going on why my model is giving a accuracy of say 80% not how do I go from 80% to 85% or 90% or whatever like you have those in your terminologies so the point is साधारण कई साधारण नहंती कई असाधारण नहंती कई साधारण नहंती कई प्रवीण नहंती मेन कथा होची कामटा कोन सो कई जो माने प्रोजेक्ट मैनेजर अछंती समान को पई गोटे प्रोजेक्ट को नै की कामटा को प्लान करे की माने समान को पई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साधारण जो माने प्रवीण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समान को पई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साधारण किंतु जो पिलाटी कोडिंग करूची और कोड फॉर एग्जांपल ताको नंपाई ठीक जणा अछि पांडास ठीक जणा अछि लाइक ही इज टेंसरफ्लो जणा अछि कि पाइटर जणा अछि ताको से सब जिंस ओडा सिना जणा अछि किंतु ताको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जणा नाही बा से उटा भलो प्रोडक्ट लॉन्च कला से प्रोडक्ट ताको केमिति नबो मार्केट को राइट सेटा ताको जणा नाही से साधारण कोथरे मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन रे साधारण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साधारण किंतु प्रवीण कोथरे कोडिंग रे आ ओडिया रे आई मीन ओडिया लोक ओडिया पिला आपनकर मो भली कोडिंग रे प्रवीण थिबा लोक अनेक सेही भलिया मैनेजमेंट रे भी प्रवीण थिबा लोक अनेक सो आमे कोन करबा ए जो साधारण आ प्रवीण रो मिस ए जो साधारण आ प्रवीणटा को गोटे बैलेंस करी के प्लेटफॉर्म ता तैयार करबा फॉर एग्जांपल जे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भलो करि परचंती से आसंतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करिया पई तांको पई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साधारण हे जिवो किंतु जी कोडिंग करजन तांको पई कोडिंग साधारण किंतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कष्ट हम जदी ए जण मिसी गला 1 + 1 2 हबनी 11 हबो राइट तो आमे जदी मु जो कहथली जो पांचटा फ्रेमवर्क एथरे ए जो लैंग्वेज साइंटिस्ट माने बा जे मोर बंधु अछन प्रोफेसर माने जो बंधु माने अछन समान घर ओडिया समान ओडिया रे प्रोफेसर इंग्लिश रे प्रोफेसर लैंग्वेज रे प्रोफेसर दे आर प्रोफेसर इन देयर ओन वर्ल्ड दे लाइक आमे जो कंप्यूटिंग को कंप्यूटिंग कथा कहले समान को मन भीतर टिके रहूची जे समान कंप्यूटर रे प्रवीण समान लैंग्वेज रे प्रवीण आ कंप्यूटर प्रवीण दि जण लैंग्वेज रे प्रवीण कंप्यूटर रे प्रवीण और बिजनेस रे प्रवीण दि जण मिसे गले हमें कोन पाई परियो लैंग्वेज प्रोडक्ट एबे एनएलपी बा लैंग्वेज प्रोडक्ट हमें देखुन लाइक हाउ मेनी लाइक वी डोंट इवन हैव ए ओडिया रे भलो स्पेल चेकर ही नहीं एबे राइट मशीन ट्रांसलेशन इज ए हार्ड प्रॉब्लम लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट एबे ऐड करि चंती राइट and then so the point being साधारण और प्रवीण सबडे अछंती आपन पई जोटा आपन जोथरे प्रवीण आपन से प्रवीणटा को ऐड करिवे आ मु जोथरे प्रवीण मु से प्रवीणटा को ऐड करिवे ए जो सब प्रवीण माने ऐड करले कोन हे जबो ना हमर जो इकोसिस्टम टा कहूछु इकोसिस्टम टा गोटे कॉम्प्लीमेंटरी इकोसिस्टम हे जबो जो जिनसटा रियल आउटपुट दबो
आउ सेटा ओडिया मान को लाभ करियो फॉर एग्जांपल को काहा को लाभ करियो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स जो माने पास करिके आछंती राइट if they don't know if they do not know programming if they do not know AI and ML they are going to fall flat right I mean एबे हाथ गणति रे आमे चेष्टा करथलु माने कोडर माने गोटे ओपन सोर्स मॉडल टे तयार करिया पई कोडर नहंती हाथ गणति कोडर अछंती राइट एंड जेबी अछंती सेमन सब so we need to build the next generation of coders and to come back आउ अधिका न लंबे कि to cut this long story short माने कोन करिवार अछि ना किए प्रवीण अछंती से प्रवीण मानकर नॉलेज को नै कि मिसै कि साधारणता को स्ट्रेंथ टा को यूज करके वीकनेस टा को इग्नोर करके कंबाइन करके हमें एज ए कम्युनिटी हमें आगु को जाई पाड़िबा आउ ए आगु को जाई परिबा बहुत इंपोर्टेंट एएमएल वर्ल्ड रे सो मु बुझु जी कि हमें जो नुआ पिला मानो को इंस्पायर करिया को चाहू छु कि तांकु देखिया को चाहू छु कि कोन पॉसिबिलिटी अछि थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस सो आउ किछि अछि तमे तांकु स्पेसिफिकली जे एबे नुआ अछंते एठी तांकु किछि कहया को चाहू छंते श्योर गोटे जिनस म एड्रेस करिया पे चाहू छी जे everyone right each one of us AI and ML is going to impact us it has already impacted us right this is just not a hype we have the computing power we are doing fundamental research in computing power and computing we have the computing power that is available for large models right today we are talking of GPT-3 and stuff like that so am pakre 10 वर्ष कि 20 वर्ष आगु जो कंप्यूटिंग पावर नथिला एबे से कंप्यूटिंग पावर हम पाखे अछि राइट तो आमे बड़ो बड़ मॉडल तयारी करि परछु सो एबे मु खाली कहिबि जे समस्ते निजुक इन्वॉल्व करंतु एथिरे मीनिंग एमिति कि प्रश्न अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोन एई प्रश्नटा निजुक पचारंतु मते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिति प्रभावित करूची मु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केमिति व्यवहार करूची मु एथिरे केमिति लाभ पाई परिबि मु जदि गोटे बिजनेसमैन मु एआई द्वारा केमिति प्रभावित हेबि मु जने डॉक्टर केमिति प्रभावित हेबि मु जने डाटा साइंटिस्ट एबे करो ओडिसा पई माने कोन करि परिबि माने ओडिसा रे डाटा रिलेटेड कोन प्रॉब्लम अछि मु जने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मु कोन करि परिबि ना मु देखि परिबि जे ओडिसा स्पेसिफिक there are issues there are like bias engineering is a very important area so जो माने सोशल साइंस रे अछंती राइट से माने कोन करिवे ए जो एआई आसिले कोन नुआ सोशल प्रॉब्लम्स सब क्रिएट हबो राइट से प्रॉब्लम टा को प्रोएक्टिवली केमिति हम ताको एड्रेस करिवा so everyone can think how how AI and ML is going to impact them so my request to each of them whoever is listening in your conference, right? To have two things. One is to think how AI is going to help me, how I am going to be impacted by AI world, and what is my personal purpose that I am taking away after listening to each of this, right? I hear that you will have a long panel of speakers, and I'm excited about it. But to all your listeners, I think what I would request is again they should just take one personal project which they want to see it live right and then we never know like it can if so कहया कथा होची माने करी कराव थाई मुहि मोबिन अन्य गति नहीं तमाने जगन्नाथ जोटा करूचंती लाइक आपण मन रे गुटे आइडिया नै कि आपण भाबंतु आउ देखंतु मु एटा करि परिबि कि राइट इट मे साउंड क्रेजी टू यू बट after x number of years it might be actually ready सो एटा लागुची गोटे लॉन्ग जर्नी एआई भितरे पसिबा पय आउ ए कॉन्फ्रेंस टा प्रोबेबली गोटे छोटो स्टेप जेमिति कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्मॉल स्टेप एटा गोटे सिंगल स्मॉल स्टेप समस्त नियंतु एंड देन समहाउ गेट इंस्पायर्ड टू ट्राई आउट योर ओन प्रोजेक्ट्स तो एंड नोट पाए किछि कहया चाहउछंती कि लाइक what can we expect from this oh yeah
एंड नोट पाई मु पुणी से सेम जिनिसटा करिवि लाइक बिंदुरु सिंधु तो आमे शुनिछु लाइक आपण कहिथिले जे साधारण और प्रवीण आमे एक्सपर्ट हमर जो एक्सपर्टाइज टू ड्रॉप नहीं कि आमे गोटे स्ट्रीम क्रिएट कले से स्ट्रीम टा जाई कि जो प्रॉस्पेरिटी रो समुद्र रे मिसिबो राइट बिंदुरु सिंधु आउ किछ समय आगु पुणी मने मने पड़थला भागवत रु करी करा थाई मही मोबिन अन्य गते नहीं just think of that, just bring your ideas and let Lord Jagannath take it to success like ame karma kar chaliba thik rasta re and success or failure is somebody else. Yeah, it's a long journey and Odias in machine learning is probably a first step in the journey of our Odia community and amane सफलता आड़कू निश्चित जीवा सफलता आड़कू तो जगन्नाथଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା that is the expectations to everyone who's watching there probably do drop in live, see what are the discussions we are having, how we can take Odisha forward in AI ML, listen to thinkers, policy makers, technical people, how just start your journey, don't think about it, step by step I'm agu body chalya. Right. It is exciting. Hope everyone actually comes in irrespective of what they should encourage themselves to understand what's going on. There are many things that we don't understand. We call ourselves expert in some other things, but we still don't understand jargons, right? So so let's take that fear out and then everybody should just join in every capacity. They should just join in, refer, ask us, reach us, we should be able to help everyone, right? If they have a question, there is no silly questions. There is in the path of knowledge, like we should be able to help. If any one of your audience now or in future they have some questions, we should be able to help them. So yeah, let's hope for the best and see you all on 4th of October. Register so that you get the link to join us live and listen to everyone. So Jai Jagannath. Jai Jagannath. Vande Utkaladhanani.